Hello and welcome to my online classes. We were discussing about the COVID-19 and today we will discuss about the treatment and the preventive measures of the COVID-19. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अभी तक कोविड-19 के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं बना है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हैज़ बीन मेड येट। only thing which the doctors are giving, just the simple pain relievers are given to the patients who have got infected with this COVID-19, such as acetaminophen, or the cough syrups are given, and patients are given a plenty of fluid. But there are the main two. I will take the two drugs which are on the clinical trials. One is the hydroxychloroquine and the remdesivir. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो होता है ये ड्रग, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में भी है, और अकॉर्डिंग टू द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आईसीएमआर, दिस ड्रग कैन बी गिवन टू द हाईली ill patients of COVID-19. But according to the Director General of the ICMR बलराम बारगवा, उसने बताया है कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये हम सिर्फ उन पे हेल्थ केयर वर्कर्स विच आर टेकिंग केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स, और उनको जो दोज पर्सन्स विच आर टेकिंग केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स. तो एज पर द Director General of ICMR, the hydroxychloroquine will be given to only the frontline workers, that is the frontline healthcare workers and the caregivers of the COVID-19 patients. And this hydroxychloroquine has found a very good positive response towards the against the COVID-19 or the SARS-CoV. So, but in actual sense, this hydroxychloroquine, it is an old drug, mainly manufactured in the India, is used as an anti-malarial drug. And another drug that is called as the remdesivir, and this is an antiviral drug which was used during the outbreak of the Ebola virus. And according to the ICMR, it is thought that this remdesivir will probably stop the replication of the SARS-CoV. And now coming to the another the tech therapy which was recently approved by the ICMR. This therapy is called as the convalescent plasma therapy. Plasma therapy, and this therapy is also so you can call this as simply as a plasma therapy or blood plasma therapy. This was approved by ICMR on 16th April for clinical trials. And what we do in this plasma therapy, it is also an old therapy. यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें जो भी convalescent means the recovered patients, जो भी patient recover हुआ होगा कोविड-19 से, उनसे ब्लड प्लाज्मा निकाला जाएगा. ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और उस ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट द कोविड सारस-कोवी, स्पेसिफिक टुवर्ड्स द सारस-कोवी. और ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस ब्लड के प्लाज्मा को निकालेंगे और वो ब्लड प्लाज्मा हम इन्फेक्टेड पर्सनस को दे देंगे, देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट जो एंटीबॉडीज इस प्लाज्मा में होंगे, दे विल न्यूट्रलाइज द SARS-CoV in the infected person. But it has been only approved for clinical trials. इस वक्त the doctors are in search of the healthy donors which have recovered from this COVID-19. Now coming to the vaccine against this COVID-19, as of now there is not any vaccine against this COVID-19, and because being it as a novel virus, a novel disease, new disease, अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, और वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड टू कम इन 2021. व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन एक क्या होता है? वैक्सीन में हम साइंटिस्ट्स
पैथोजन को ले लेते हैं या पैथोजन के पार्ट को ले लेते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं कि उसमें that possesses the capacity to develop an immune response in the host but not able to produce the डिजीज इन द होस्ट। मतलब सिंपली अगर हम यहाँ पे बताएंगे, जो ये वैक्सीन होता है, वैक्सीन में हम या तो पैथोजन ले लेंगे या पैथोजन के पार्ट को ले लेंगे, उसको इनएक्टिवेट करेंगे, इस तरह इनएक्टिवेट करेंगे कि उस इनएक्टिवेटेड पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द पैथोजन में डिजीज करने की सलाहियत ना रहे, लेकिन उसमें यह सलाहियत हो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, इम्यून सिस्टम से हमारी एक किस्म की सेल्स को प्रोड्यूस करें, जिन सेल्स को हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। और वो मेमोरी सेल्स अगर दूसरी बार वो पैथोजन उस बॉडी होस्ट के बॉडी में गया तो वहाँ पे वो मेमोरी सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। तो दिस इज अबाउट द वैक्सीन। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ दिस disease. As we know, this disease, I'll again repeat it, that this disease is new to the world. There is only way to prevent from this disease is to take the preventive measures. According to the WHO, the countries must isolate, test, treat and trace. And recently the WHO chief termed the COVID-19 as a public enemy number one. And the WHO chief says that worst is yet ahead of us. अभी worst आना है. According to the chief of the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. So, what are the various preventive measures which we have to take in order to prevent ourselves, to save ourselves from this deadly disease? The first thing, that is the social distancing, because being this virus as a bigger virus as compared to the other virus, it cannot go to the air for a long distance, to a longer distance. Maintain at least the 1 meter distance with other people or with other persons which are in your surroundings. Better is to isolate, to stay at home, because already lockdown is going on. Better is to stay at the home. No need, don't go outside. If you need to go outside for any emergency, try to avoid the crowded places. Because we don't know that in a crowded place there might be a silent carrier, asymptomatic carrier. हम जब अगर हमें मजबूरी पड़ भी गई तो हम अगर बाहर जाएंगे भी तो बाहर जाने में हमें क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना है, क्योंकि उस क्राउडेड प्लेस में कोई पर्सन ऐसा होगा जो एक एसिम्प्टोमेटिक और या साइलेंट कैरियर हो सकता है, जो अभी सिम्टम्स उस डिजीज की, इस कोविड-19 के नहीं शो कर रहा है, तो वहां से वो इन्फेक्ट कर सकता है. दैट एसिम्प्टोमेटिक पर्सन कैन इन्फेक्ट द थाउजेंड्स ऑफ द पर्सन. लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन या साइलेंट कैरियर जिसको हम कहेंगे, वो हमें एक नॉर्मल लगेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एसिम्प्टोमेटिक पर्सन इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एन clinical symptom of this COVID-19. And the next preventive measure is wash your hands regularly for at least 20 seconds with the soap and water. What happens here कि अगर आप साबुन और पानी से हाथ रेगुलरली धो रहे हो, अगर बाई चांस आपके हाथ में सारस कोवी आया भी होगा, तो वहाँ पे जो साबुन जो है, सोप जो है, वो उस सारस कोवी वायरस के लिपिड के साथ माइसिल्स बनेंगे और वो वॉश आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज द प्रैक्टिस गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन. रेस्पिरेटरी, आप अपने रेस्पिरेटरी ट्राई टू प्रैक्टिस ए गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन. Try to maintain, try to boost your immune system also. Immune system is one's immune system is the only one thing, and the preventive measures are the only two things which can prevent us from this disease. But the next point is, that is the
According to the CDC, Center for Disease Control and Prevention, cover the mouth and nose when you are sneezing or when you are coughing by tissue or by means of a tissue. अगर आपके पास अब टिश्यू नहीं है, आप जब खांस रहे हो या आप छींक रहे हो, उस वक्त अपने मुंह को, अपनी नाक को बंद कर लीजिए, कवर कर लीजिए बाय मींस ऑफ ए टिश्यू. लेकिन अगर आपके पास अब टिश्यू नहीं है, ट्राई टू यूज द इनर साइड ऑफ द एल्बो हियर in this way during the coughing and the sneezing, so that this, agar by chance if the virus may be present in the respiratory droplet, that might fall on the tissue or the clothes, on your clothes. And उसके बाद उन क्लोथ्स या टिश्यूज़ को रख दीजिए फॉर 72 आवर्स. 72 आवर्स के बाद जो वायरस खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होगा. And according to the WHO, World Health Organization has recommended that cover the use the mask only when you are sneezing or coughing, or when you are taking care of the suspected person. But my advice is used to you people is to, if you go outside the home in any emergency, try to cover your face with a mask. Try to cover your face with a mask. And last पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश कर लीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लीजिए, बैलेंस्ड डाइट खा लीजिए, और साथ साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए. और इम्यून सिस्टम आपके nature, God has provided you with the best medication, that is your immune system. वो immune system इसको न्यूट्रलाइज, इस पैथोजन को न्यूट्रलाइज, इसको सारस कोवी को न्यूट्रलाइज करेगा. और इसमें मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है, बहुत ही कम है, just 3%. that only, but the severity goes mainly to the older people. और यहाँ पे एक और लास्ट पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमें बताया जाता है कि एक कहावत है कि दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. बट यहाँ पे आपका सिंपली इट इज़ ओनली द प्रिवेंशन एंड योर इम्यून सिस्टम विच कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम दिस डिजीज. स्टे होम, स्टे हेल्दी. थैंक यू.